Very good morning, students. So, today we are going to start our physics, and the first unit of this subject is the electrostatics. It is very interesting, and this concept is related to our daily life problems also. And here we are going to start our new topic of the class plus 2. So, we'll start from electrostatics. See, beta, the term clarifies its meaning by itself. Electrostatics. Electro means we are dealing with charges, with electricity, with moving electrons, or simply electrons. Static means the thing which is at rest. If can we can talk about the charges also, or we have discussed about static equilibrium also. It means the static signifies the term at rest. Static का मतलब क्या होता है? Rest. And electro we are dealing with charge or current. So now we will discuss in detail the term electrostatics. Electrostatic, as I told you that electro means charge. So we have charge, and the further division of the charge is under two categories, that is positive and negative. We have two types of charge, positive charge and the negative charge. This thing we are studying from the previous classes also. We know that if the both the charges are same, like if both the charges are positive, they will start repelling. But if we have unlike charges, then they will start attracting each other. I have few examples also for the charge, like if we have glass rod and silk cloth. Suppose I am rubbing glass rod with the silk cloth, then what will happen? Both see, but everything in the universe is made up of charge. Our body itself is made up of charge. Everything which is present in the universe is made up of charge. So when we rub two objects with each other, they will start transferring the electrons or charged particle from one body to another. अगर हर बॉडी में चार्ज है, ऑब्वियसली व्हेन वी विल स्टार्ट रबिंग विद ईच अदर, वो अपना चार्ज क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. Simply I have taken example of this glass rod and silk cloth. If I am rubbing glass rod with the silk cloth, the silk cloth will acquire negative charge. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वो ग्लास रोड से चार्ज ले लेगा, और ग्लास रोड क्या कर रही है? वो अपना चार्ज लूज़ कर रही है, वो अपना नेगेटिव चार्ज लूज़ कर रही है, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? उस पर डोमिनेट हो जाएगा. सो इट विल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल negative. Other example I have taken fur and ebonite rod. If when I will rub fur and ebonite rod with each other, same thing will happen. Fur will acquire positive charge and ebonite rod will acquire negative. Another example I can take, which we are doing from from the previous classes, and maybe you know this thing, like when we rub dry scale, with the dry hair, when we are rubbing scale with the hair, after some time that scale will start attracting the bits of paper. What it shows? It clearly shows that scale got charged. स्केल क्या हो गया? चार्ज्ड हो चुका है. वाई? बिकॉज वी हैव रब्ड. अब रबिंग की वजह से वो चार्ज उसने एक्वायर कर लिया है, एंड ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी it will start attracting the piece of paper or bits of paper. Simple example I have taken. Another example also I can describe, that when we sit for a long time on the seat of car, and when we stand from the car, जब हम कार की सीट से जाते हैं या कार से उतरते हैं, देन वी हेयर द साउंड ऑफ क्रैकलिंग. वो क्रैक का साउंड हमें थोड़ा सा हेयर होता है. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चार्ज, क्योंकि हमारी बॉडी कार की सीट से रब हो रही है, और रबिंग के बाद बॉडीज़ क्या कर लेती हैं? चार्ज उनके पास है, बट ऑन द सरफेस चार्ज गेट डेवलप. सरफेस पे वो चार्जेस क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? क्या प्रोड्यूस हो रही है? Frictional electricity. Even I can say this, nowadays we are saying that from the body's charges are getting produced. क्यों? क्योंकि स्टैटिक, ये किसकी वजह से है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जब दो बॉडीज आपस में रब होती हैं, देन दे एक्वायर द चार्ज ऑन देयर
surfaces. This is called the static electricity. We have two kind of electricity, static and dynamic. स्टैटिक का मतलब जब चार्जेस हमारे क्या है, रेस्ट पे है. अब इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कोई करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना हमारा फ़ैन चल सकता है, ना हमारी ट्यूब्स चल सकती हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द स्टैटिक चार्जेस, एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Frictional electricity, I explained you, this is all about the frictional electricity. Or another example also I can explain that why the object which is losing charge gets positively charged, and the thing which is getting which is getting negatively charged, उस पर negative charge ही क्यों आता है. Just see the example. वी नो हमारे पास क्या होता है, एक एटम होता है. एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स तो कभी भी मूव नहीं करते, बट इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास क्या बने होते हैं, ऑर्बिट्स बने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. KLM शेल बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर. इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स तो अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे. सपोज मेरे इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अब जब लूज होगा, आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम के एग्जांपल ही ले. एटॉमिक नंबर इज 11, कॉन्फिगरेशन आई कैन राइट 2, 8 एंड 1. अब इसका ये फर्स्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है. फर्स्ट शेल में कितने आ गए, 2. सेकंड में 8 आ जाएंगे. थर्ड में कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन. अभी 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाए, द एटम विल बिकम स्टेबल. एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. एज वी नो इन द न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है. दिस इज द रीजन ओनली वी कॉल इट एज द न्यूट्रल एटम. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विल लूज, अब एक नेगेटिव पार्टिसिपेंट उसमें से जा रहा है, तो कौन डोमिनेट करेगा, जितना नेगेटिव पार्टिसिपेंट रिमूव हो रहे हैं, जितने नेगेटिव पार्टिसिपेंट्स उसमें से रिमूव हो रहे हैं, उतने ही पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे. सो दैट इज़ अ रीज़न वी राइट Na positive. Why? Because we are losing 1 electron, and that much positive charge will get dominated on that atom, or we can say ion. Clear this thing? So this is the reason why the atom which is losing the electron gets positively charged, and which is getting or gaining the electron gets नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है. सपोज क्लोरीन की एग्जांपल ले. क्लोरीन का कितना होता है हमारे पास, 17, 2, 8, 7. इफ़ इट विल गेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इट विल बी स्टेबल. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा. सो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, देन इट विल बी स्टेबल. अब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ तक ये न्यूट्रल है. अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट हो गया. सो वी राइट क्लोरीन नेगेटिव चार्ज. दिस इज कॉल्ड एनायन. दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो विच वी कैन इंक्लूड इन फिजिक्स subject too. So we have discussed about frictional electricity. Now quantization of charge. What do you mean by quantization of charge? Suppose I want to find the total charge present on the conductor. How can I find it? Its formula is Q is equal to Ne. Q is equal to Ne means Q total charge, N how many number of electrons are present on the conductor, and that E, it is the charge present on one electron whose value is, we know the charge present on one electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. That is I have written in magnitude. Magnitude means no need to write the negative sign, otherwise we know electrons carry negative charge. So Q is equal to Ne. If we want to find the total charge present on the electron, what we have to apply, we have to use this formula, that is Q is equal to N. N is the number of electron. They can be 2, 3, 4 and so on. E, it is fixed. It will remain constant. That is charge present on the one electron. Next, conservation of charge. Conservation means charge can neither be created nor can be destroyed, only it can be converted from one form to another. I have taken that example that when we are rubbing glass rod with silk cloth, I am not saying that charge is wasting or I am bringing charge from somewhere, but they are getting conserved. Charge क्या हो रहा है हमारा, conserve हो रहा है. How it can be proved?
ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो चार्जेस क्या होने शुरू हो गए, ट्रांसफर होने शुरू हो गए. इट विल एक्वायर पॉजिटिव ऑन द सेम साइड, इट विल एक्वायर द नेगेटिव. जितना लूज हुआ उतना ही गेन हुआ, मीन्स चार्ज क्या हो गया हमारा, कंजर्व. सो आई कैन से दिस थिंग वेरी कॉन्फिडेंटली दैट चार्ज रिमेन्स कंजर्व. Next, we have discussed the properties of charge. Still few are left. Like I can tell this thing that positive charge or like charges repel, unlike charges attract. Charge present on the electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And we have discussed this thing also that charges remains quantized. चार्ज क्या होते हैं हमारे पास, क्वांटाइज्ड होते हैं. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ charge. Conservation also we have discussed. Next thing we will discuss in the coming session. Hope you understood all the terms and just try to understand these concepts. If you will have any kind of query anytime, you can contact your subject teacher. Thank you. Have a nice day.